Hello everyone and welcome back to my channel Sound Education. So today we will discuss on the chapter Habitat and Adaptation. The topic is Biotic component and decomposer. So without wasting time, let's start it. So first we will study about biotic components. All living components such as man, animals, plants, bacteria, fungi, etc. all are called biotic component. जितना भी जीवित प्राणी है सभी को बायोटिक कंपोनेंट बोला जाता है. Types of biotic component. The different biotic components can be categorized on the basis of their role in our environment follows. They are autotrophs and heterotrophs. बायोटिक कंपोनेंट को दो भाग में भाग किया गया है. एक है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा है हेट्रोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप बोलने से प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, एंड हेट्रोट्रॉप बोलने से एनिमल्स. ओके, सो लेट्स लुक टू द फर्स्ट पॉइंट. Autotrophs. The green plants are known as autotroph because they make their own food by carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. This process is known as photosynthesis. तुम लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है और ये क्या चीज़ है, कैसे यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद व खुद बनाता है. ये चीज़ सारा क्लास 5-4 में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो. सो आई नीड नॉट हैव टू एक्सप्लेन अबाउट फोटोसिंथेसिस वंस अगेन इन दिस क्लास. सो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. क्यों ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है? ग्रीन प्लांट्स में एक पिगमेंट है, वो है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स. ओके, एंड यही क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल हेल्प्स द लीव्स टू अब्सॉर्ब द सनलाइट. और यही क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट एब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है. और बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स द ऑटोट्रॉप्स इज एबल द प्लांट इज एबल टू मेक देयर ओन फूड. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज autotrophs. Okay, plants prepare their food themselves from the material available in nature. Therefore plants are called autotrophs. Auto means self and trop means food. Plants use some of the food they produce and store the rest. The food stored in the plant is taken by or used by higher animals and human beings. So a green plant is called the producer. Next topic is we will study about the usefulness of plants. Plants and trees provide many types of medicinal components, spices and fibers. बहुत सारा मेडिसिनल कंपोनेंट्स जैसे मेडिसिन सब प्लांट से हम लोग को मिलता है. एंड स्पाइसेस जो हल्दी मसाला हम लोग खाते हैं ना, वो सारा चीज़ कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. और जो कपड़ा पहनते हैं हम लोग दूसरा दूसरा फाइबर का, दूसरा दूसरा स्टाइल का, जैसे सिल्क फाइबर, देन केम जूट, देन केम कॉटन. ऑल दिस कम्स फ्रॉम प्लांट्स. ओके, डिफरेंट फाइबर्स आर coming from plants. Trees also provide wood, gum, resin and rubber. Trees wood भी provide करता है, gum भी and rubber और resin भी. Human beings and animals are directly and indirectly depend on plants for their food. Directly हो या indirectly हो, सारा human beings और animals depend करता है plants के ऊपर खाने के लिए. Some animals get shade and protection from rain and heat from trees. Some animals make their shelter in plants or trees. Point number 6. Plants also plays an important role in maintaining oxygen carbon dioxide balance in nature. जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है एनवायरनमेंट में, उसी को बैलेंस करके रखता है कौन? प्लांट्स. ओके, ऑक्सीजन इज यूज अप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड बर्निंग fuels and carbon dioxide evolve. This carbon dioxide so produce gases into the atmosphere. Plants use the carbon dioxide during photosynthesis and release oxygen in return. Volcanic eruption and decay of dead plants and animals also release the carbon dioxide into the atmosphere. This carbon dioxide dissolves partially into ocean, which ultimately forms sedimentary rocks. In this way, both carbon dioxide and oxygen are generated and consumed in a cyclic way, such as consumption and producing of oxygen and carbon dioxide leads to a balance between the concentration oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Thus, plants maintain a balance between the concentration of carbon dioxide and oxygen in nature. मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बैलेंस बना के रखता है एनवायरनमेंट में, और वो सारा काम करता है प्लांट्स. In short,
plants plays an important role in maintaining oxygen carbon dioxide balance in nature. Next, we will study about heterotrophs. Animals and human beings do not have chlorophyll. Autotrophs में plants में क्या था? Chlorophyll था. That's why they can prepare their own food. But animals do not have chlorophyll, so they cannot prepare their own food, or they cannot produce their own food. They depend on other for food. That is why they are called heterotrophs or consumer. All consumer do not obtain their food the same way. दूसरा तरीका से दूसरा कंज्यूमर दूसरा तरीका से अपना फूड मतलब फूड खाते हैं. दे कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 टाइप्स. इसलिए इन लोग को 4 प्रकार में भाग किया गया है. नंबर 1 इज हार्बिवोरस, नंबर 2 इज कार्निवोरस, नंबर 3 इज ओमनिवोरस एंड नंबर 4 इज स्कैवेंजर्स. हार्बिवोरस हु ईट ओनली प्लांट्स पार्ट, जो ओनली प्लांट्स पार्ट और प्लांट्स को खाता है उसको बोलते हैं हार्बिवोरस. घास फूस खाता है उसको बोलते हैं हार्बिवोरस. दे गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. एग्जाम्पल काउ, जिराफ. दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर. इसलिए इन लोग को क्या कंज्यूमर बोला जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर. देन कम नंबर 2 कार्निवोरस. दे ईट अदर एनिमल्स. कार्निवोरस एनिमल्स क्या करता है? दूसरा एनिमल्स को खाता है. दे गेट देयर फूड इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. डायरेक्टली तो वो प्लांट्स से खाना नहीं खाता है, लेकिन इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. जो प्लांट को खाता है वही प्लांट ईटिंग एनिमल को कार्निवोरस एनिमल खाता है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर. एग्जाम्पल लायन, wolf. Then comes omnivorous. They consume both plants and animals. ये क्या करता है? ये टाइप का एनिमल क्या करता है? both plants भी खाता है और animals भी खाता है. Example we can give human being and cockroach. Then number D is scavengers. They consume the dead bodies of animals. ये animals क्या करता है? दूसरा dead body का मांस को खाता है. Example crow, vulture, etc. to keep the environment clean. So I hope you have understood. So now the next topic is usefulness of animals. Animals give us many food material like milk, butter, ghee, curd, meat, egg and honey. Number 2, they provide us many cloth fiber like silk, wool, fur. Many animals like horse, ox, camel, elephant, donkey are used for transporting wood and man. Some animals are used in agriculture field for plowing and sowing. Jackal, crows and vulture consume the dead bodies of animals. They are called scavengers. The word scavenge means to collect useful things from the waste that is thrown away. They help to do a cleanup job. So I hope you have understood the topics, today's topic. And last we are going to study about decomposer. Microorganisms such as bacteria and fungi which live on dead and decaying plant and animal matter are known as decomposer. जितना माइक्रोऑर्गेनिज्म है जैसा बैक्टीरिया और फंगी क्या करता है? वो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर निर्भर करता है. वो वही चीज़ को ही खाएगा. जो मिट्टी में गाड़ दिया जाता है वही चीज़ को खाता है. एंड वो इनडायरेक्टली क्या करता है? दे ऑल्सो डू क्लीन अप जॉब. जैसे स्कैवेंजर क्लीन अप जॉब करता है ना, एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, वैसे ही डिकम्पोजर भी क्लीन अप जॉब करता है. दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर बिकॉज दे ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट इन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल वेस्ट एंड प्लांट डेब्रिस इनटू सिंपलर सब्सटेंस. जितना बड़ा भी सब्सटेंस होने से भी उसको क्या करता है? खा के सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है. दे कंज्यूम ए पार्ट ऑफ दिस सब्सटेंस फ्रॉम देयर ओन रिक्वायरमेंट एंड रेस्ट मिक्सेस विद सॉइल. आधा वो लोग खा देता है और आधा वो लोग क्या कर देता है? मिट्टी में मिक्स कर देता है. क्या करने के लिए? सॉइल को फर्टाइल करने के लिए. Substance that can be decomposed, broken down by decomposer like paper, plants and animal residue etc. are called biodegradable, while which cannot be broken down by decomposer are called non-biodegradable. Example plastic, DDT etc. जो डिकम्पोज किया जाता है, डिकम्पोज हो जाता है आफ्टर ब्रेकिंग इनटू पीसेस, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है पेपर विच इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. एंड जो डिकम्पोज नहीं होता है मिट्टी में उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. एग्जाम्पल प्लास्टिक. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक क्लियरली. सो नेक्स्ट इज यूजफुलनेस ऑफ डिकम्पोजर. They are very useful or very helpful in complete disposal of dead remains of living being.
They can change the nutrient in the residue of the dead animals or plants into the usable form. They are helpful in recycling of nutrients in the biosphere. Recycling करने के लिए help करता है. So that's all for today. Thanks.